Okay. Let me share my screen. 1 second. Okay. Super apologies for the mess up. I had lost my signals, or the video's back on, but I had to do it again. I had to start another class. You can't take any. क्या कहते हैं उसको? Anyway. अच्छा, हम बात कर रहे थे वेट मॉड्यूल की. 1 second. So essentially, what a weight module does is कि weight module में essentially what you do is कि आपके पास एक पार्ट की प्रोसेसिंग लेट्स से आपके पास चल रही है, और and your arena is following its weight. क्या कहते हैं, आपका वेट का रूल फॉलो कर रहा है. सो वेट बाय, जैसे कि इसका नाम है, इट वेट्स फॉर द प्रोसेसिंग टू कंप्लीट, और उसके बाद ये डाउन टाइम को स्टार्ट करता है अरीना में. सो अगर आपकी कैपेसिटी 2 से 1 के ऊपर डिक्रीज होने वाली है, तो इट कंटिन्यूज, वो इमीडिएटली उस कैपेसिटी डिक्रीज को स्टार्ट नहीं करता. इट वेट्स फॉर प्रोसेसिंग टू कंप्लीट, और उसके बाद वो आपकी आपके प्रोसेसिंग को दोबारा स्टार्ट कर दे. सॉरी, इट वेट्स फॉर द पार्ट टू कंप्लीट, उसके बाद वो अपना डाउन टाइम स्टार्ट करता है. और जितना, जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे प्रोसेसिंग खत्म हो गई, तो इस टाइम से लेके वो अपना ब्रेक स्टार्ट करता है. लाइक अगर पहले आपके पास 12 o'clock के ऊपर आपका ब्रेक स्टार्ट हो रहा है, और आप इसको लेके आते हैं 12:15 पे अगर आपकी एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड होती है, सो व्हाट अ वेट रूल डज, वो 12:15 के ऊपर ब्रेक को स्टार्ट कर देता है, एंड इट एंड्स द ब्रेक एट 1:15. वो जितना आपके पास प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है, इतना एक्स्ट्रा टाइम वो आगे एकोमोडेट करता है, जब कि वो वापस कैपेसिटी की इंक्रीज डिक्रीज को दोबारा उसको स्केड्यूल उसका करता है. सो इट्स काइंड ऑफ रूल कि जहाँ पे आपकी पार्ट की प्रोसेसिंग को प्रायोरिटाइज किया जाता है, इवन दो अगर आपके पास कैपेसिटी की डिक्रीज स्टार्ट हो गई है, इट वेट्स फॉर द पार्ट टू कंप्लीट प्रोसेसिंग. उसके बाद वो कैपेसिटी को डिक्रीज करता है फॉर द होल रेंज ऑफ टाइम जो कि आपने उसको दिया होता है अरीना को, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स अगेन. वो टाइम पीरियड जब गुजर जाता है, सो देन इट अगेन रीस्टार्ट्स इट्स जो भी इसका स्केड्यूल होता है, या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, उसको दोबारा स्टार्ट कर देता है. इग्नोर में आपके पास क्या होता है? आई होप that was clear enough. Let me know if it wasn't. इग्नोर में क्या होता है? इट्स द सेम एज आपका वेट मॉड्यूल, ठीक है. इट कैरीज ऑन, इट कैरीज आपका, द पार्ट इज प्रोसेसिंग इज कैरीड इवन दो आपका ब्रेक टाइम जो ब्रेक टाइम है, ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ होता है, बट वो उस यू नो it doesn't accommodate any lost time further ahead. So for instance, अगर आप की, let's say अगर आपकी 12 o'clock के ऊपर आप डाउन टाइम में आपका स्केड्यूल ब्रेक स्टार्ट हुई है, एंड इट कंटिन्यूज टू 12:15. सो अब वो ये नहीं करेगा कि वो 12:15 से लेके 1:15 तक आपकी ब्रेक लेगा. नो, वो 12 पे ही वो उस ब्रेक की स्टार्ट टाइम को कंसिडर कर लेगा, और वो 1 PM के ऊपर वो अगेन उसको अप टाइम उसकी स्टार्ट कर देगा, या उसकी कैपेसिटी को वापस उसको इंक्रीज कर देगा. सो द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड इग्नोर इज बेसिकली कि वेट आपका इंतजार करता है फॉर पार्ट प्रोसेसिंग टू कंप्लीट, एंड देन इट स्टार्ट्स द ब्रेक. इग्नोर मॉड्यूल क्या करता है? इट इग्नोर्स एनी टाइम दैट वाज बीइंग टेकन हियर, और वो एसेंशियली इस टाइम पीरियड के ऊपर आपकी ब्रेक को स्टार्ट कर देता है, कैपेसिटी डिक्रीज को, लेकिन जो पार्ट की प्रोसेसिंग चल रही थी वो उसको कंप्लीट होने देता है अकॉर्डिंगली, एंड देन इट continues to have the break until जब टाइम रीच हो जाता है, देन वो दोबारा स्टार्ट करता है. सो लेट्स से अगर आपके पास कोई ऐसा पार्ट की प्रोसेसिंग हो रही है कि जो कि लेट्स से आपके पास 50 मिनट्स ले रहे हैं, ठीक है. सो आपके पास एक पार्ट की प्रोसेसिंग है जिसने कि यहाँ पे 10 मिनट्स ले लिए, और अब उसको 50 मिनट और भी चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे आपका कैपेसिटी डिक्रीज है. सो एन इग्नोर मॉड्यूल आपकी उस कैपेसिटी डिक्रीज को इग्नोर कर देगा, और वो बिल्कुल आखिरी 10 मिनट तक कैपेसिटी को डिक्रीज करेगा. इस टाइम के ऊपर आपकी प्रोसेसिंग पूरी की पूरी चल रही होगी. इट योर
योर ऐसा सच कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उस प्रोसेस कैपेसिटी को स्टार्ट उस वक्त करता है जब इस पार्ट की जो सर्विस में होते हैं पार्ट्स, उनकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाए, तब जाके वो यू नो उसको स्टार्ट करता है. सो दैट्स बेसिकली an overview of what preempt, wait, and ignore does. Let me know if this wasn't clear. Give it a read over here. Um, ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है. Give it a read. Let me know if you have had any issues. I'll go over it again. And needless to say कि अगर आपके पास एक मशीन है एंड उसके पास कोई पार्ट है ही नहीं, उसके पास कोई एंटिटी नहीं है वो मशीन करने के लिए, इट्स सिटिंग आइडल, और कैपेसिटी का ये वाला आपका टाइम बच जाता है ब्रेक डाउन का या ब्रेक लेने का, तो वो ब्रेक उसी वक्त ले लेगा. ये 3 रूल्स किस वक्त आपके पास एप्लीकेबल होते हैं? जब आपके पास यू नो व्हेन आपके पास पार्ट्स इन सर्विस होते हैं, उस टाइम के ऊपर उस पार्ट की प्रोसेसिंग को अकोमोडेट करने के लिए आपके पास ये 3 रूल्स यूज होते हैं. बट इफ अ मशीन इज आइडल, इफ अ रिसोर्स इज आइडल, तो वो जो भी स्केड्यूल्ड ब्रेक होती है, स्केड्यूल्ड कैपेसिटी डिक्रीज आपके पास होता है, वो उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है. बट इन द केसेस ऑफ पार्ट्स, there is a different behavior exhibited. So I hope that clears this stuff up. So coming back to Arena, we were at कि हम rework की schedule को change कर रहे हैं, and हमारे पास schedule name था. We entered a schedule name and then we wanted to have a schedule rule to enter. Now based on what we've studied, जो 3 rules हमने पढ़े हैं, how do these relate? अब यहाँ पे हम कौन सा rule select करें? For that I'll have to go back to this sheet. This brings us to the question, ये paragraph एक explanation दी हुई है. This brings us to the question of when to use each of the rules. So there are no strict guidelines, but there are a few rules of thumb that we may use. First आपका है कि if the duration of the scheduled decrease in capacity is very large compared to the processing time, then ignore option may be an adequate representation. What does it say? If the duration of the scheduled decrease in capacity, duration of the scheduled decrease का मतलब ये है कि in simpler terms we can say कि आपके पास एक जो टाइम डिक्रीज होता है, और अगर सिंप्लिसिटी के मैं उसको कह दूं कि जहाँ पे आपके पास फेलियर अकर होता है, अगर आपका फेलियर का टाइम इट्स वेरी लार्ज टू कंपेयर टू द जो आपकी पार्ट की प्रोसेसिंग चल रही है, सो इन दैट केस वी मे यूज द इग्नोर मॉड्यूल. इफ आई कैन राइट दैट डाउन, अगर आपके पास फेलियर का टाइम is quite greater than processing time, in that case we use ignore module. Ignore module तो बिल्कुल इंस्टाग्राम बन गया. सॉरी, इग्नोर मॉड्यूल कह रहा हूँ, इग्नोर रूल. Failure time is greater than processing time, you use ignore. Second one is if the time between capacity decreases is large compared to the duration of the decrease, the wait option could be considered. Time between capacity decreases का मतलब है कि आपका टाइम बिटवीन फेलियर, या उसको कह दे जो आपने पहले कुछ शायद पढ़ा था, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, लाइक दैट, उसको आप फॉलो कर ले. सो व्हेन द टाइम बिटवीन फेलियर is large compared to the duration of the decrease, so I can say time between failure is greater than failure time. In this case we use wait. So these are two essential rules जो कि आप फॉलो कर सकते हैं from case to case. अच्छा, हम यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करते हैं? We actually, for this model, we selected the ignore option because in most cases an operator will finish his task before leaving and that additional work is seldom considered.
So यहाँ पे हम we use ignore module, um, you know, and the reason for that is कि um, let's say आप कहीं पे किधर जा रहा हूँ मैं, let's say आप you're working at a place जहाँ पे आपकी 1 बजे at 1 p.m. it's your lunch time, 1 to 2 is your lunch time. Let's say किसी एक दिन या occasionally आपका कुछ काम होता है जो कि थोड़ा एक्सीड हो जाता है एंड यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग 10-15 मिनट आप 1 बजे से ज़्यादा काम कर लेते हैं, सो यू एंड अप टेकिंग योर ब्रेक एट 1:10 और 1:15। तो आप अपने वर्क प्लेस के कभी भी ये नहीं करते कि अच्छा मैंने इतना टाइम लेट लिया था अपना ब्रेक, सो अब मैंने पूरा 1 घंटा लगाना है। नॉर्मली यू डोंट, एज अ गुड वर्कर यू टेंड टू कम बैक जो कि आपका एक्सपेक्टेड टाइम होता है, बिकॉज people consider your working hour again to resume at 2, so they don't know कि आपने कोई काम आप कर रहे थे जिसकी वजह से आपका लेट हुआ था and I have to wait an additional 10-15 minutes to reach out to you. So as a good worker you tend to आप उसको टाइम को ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते and you come back. So a similar case happens here. ठीक है, अगर let's say if a worker works a little bit more but he still ends up coming back to his work again at a certain time. So in that way हम यहाँ पे it's a certain setup जहाँ पे additional processing times ज़्यादा consider हो नहीं रहे, so we use ignore rule, हम उसको ignore कर देते हैं। and what an ignore does, if I can remind you, ignore आपकी पार्ट की प्रोसेसिंग वो कर लेता है जो भी काम होता है, देन डिक्रीज जो है वो इस टाइम के ऊपर ही स्टार्ट हो जाता है एंड द मशीन इज बैक अप और द रिसोर्स इज बैक अप एट स्केड्यूल्ड टाइम। कहीं पे जो है ना टाइम की एकोमोडेशन या उसकी रीएलोकेशन नहीं आती। एनीवे दैट वाज ऑल अबाउट क्या कहते हैं उसको, resources and schedules. So we've set up a schedule जिसमें हमने for the first 7 hours we followed one module and for the second 7 hours we've followed another module. Then we've set up a resource, हमने उस resource को link किया उस schedule के साथ and we've set it up to follow the ignore rule and just like that ये सारी जब आपकी fixed capacity पे काम कर रहे हैं, so rework is working on schedule and that schedule basically arises from the fact कि हमने यहाँ पे resource की capacity को increase करना था for a certain amount of time. So that's how you do resource and scheduling modules. Second, we wanted to do was क्या कहते हैं, failure. So now you're told कि आपका जो sealer process है उसमें occasionally failures आते हैं. So this doesn't work smooth enough and there are failures in it. So अब हम इसमें failures लाना चाह रहे हैं. In order to insert failure into the sealer process, you have to go to advanced process on Arena. यहाँ पे आके आपने failure के ऊपर click करना है. You don't have anything here, so you double click here once. We are gonna name this failure and we are gonna call it, चूंकि हमारे पास sealer का failure आ रहा है, so sealer failure. This is going to be a count failure क्योंकि आपको बुक में दिया गया है कि you've got 120 नहीं सॉरी हाँ time failure. It's a time failure because आपके पास 120 minutes के लिए you've got an up time and then for 4 minutes you've got a down time. Up time आपका कितना है? It's 120. Time unit is minutes. Downtime is 4 and then this one is 4 minutes. And uptime in this state, this is not needed now. We'll ignore this one for now. So we've added sealer failure, which basically tends to work on 120 and 4. And now we want to go back to process to resource. अब हमने क्या करना है, हमने failure यहाँ पे define कर दिया, but ये failure ये वाला ये failure हमें ये नहीं बता रहा कि ये कहाँ पे लिंक हुआ है. So we want to link this failure to this sealer process. उसको लिंक करने के लिए we go back to basic process and we click on resource. जब आप resource के ऊपर आएंगे, so here in this row हम इसको define कर देंगे कि जी we're having some failures occurring. वो failures कहाँ से होंगे? आपके पास failures का column है.
you come on failures, you click here, और यहाँ पे you double click. यहाँ पे जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, so it will pick up the value that you had entered previously, उसको कहते हैं sealer failure. And now this sealer failure again is going to follow a certain rule. या वो वेट के ऊपर आएगा, या वो इग्नोर के ऊपर आएगा, और या वो प्रीएम्प्ट लेगा. So it's gonna follow a rule, और वो कौन सा रूल होता है? It's gonna be, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर आपके पास you're having essentially 120 minutes of uptime, and then you've got 4 minutes of downtime. So इस 120 minutes को मैं कह सकता हूँ कि this is more of like the time between failure. जितना आपका अप टाइम होता है, आपका वो टाइम बिटवीन फेलियर ही काउंट होता है. और 4 मिनट्स जो है मेरे पास फेलियर अकर हो रहा है, so I can call this a 4 minutes failure time. Now this is quite large than this one, as it's a greater than, and this perfectly follows the wait rule. So I will select a wait rule here, and that solves a problem. और अब हम इसकी capacity fixed है, but it's following a failure in its processing, which is coming in at after every 120 minutes, it goes down for 4 minutes. So ये आपका सेकंड ट्रैफिक हो गया जो कि आपने ऐड करना था इस क्या कहते हैं उसको, अरीना के मॉडल में. फाइनली वी वांट टू काउंट कि हमारे पास कितने क्यूज बनते हैं और या कितने पार्ट्स आते हैं, इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें ज़रूरत है रैक्स लगाने की या नहीं. In order to do that, we will come back to Arena and we are going to say कि you have to go to advanced processes, and we're going to go to statistics. So statistics से basically आप count कर सकते हैं कि how things are going, और वो फिर आपको categorization दे देता है. So we don't have anything here, so double click here once. Statistic में आपने count करना है rework queue stats. Want to know कि आपका जो rework queue है उसमें how is that behaving. Okay, we want to set up this as a frequency, क्योंकि हमें वो frequency चाहिए कितनी दफ़ा हमारे पास जो है ना वहाँ पे वो parts build up होते हैं. Type is going to be value because we're basing this off a value, मतलब 1 2 3 4 5 6 हमारे पास एक value आ रही है. Expression में you have to say, आपने वो बेसिकली कैलकुलेशन बतानी है कि वो एक काउंट करे यहाँ पे कि कितने पार्ट्स जमा हो रहे हैं आपके पास. इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट, जस्ट राइट क्लिक हियर, आप इसको कर दे बिल्ड एक्सप्रेशन. इट्स एन इजी वे. एंड नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेट अप हियर, हम देखना चाह रहे हैं क्यू को. सो यू क्लिक ऑन क्यू, फर्दर कैटेगराइज कर दें इसको. सो वी वांट टू नो the number in queue, कि हमारे पास queue में कितने parts जमा होते हैं. And an easier one for that is the current number in queue. We don't want to do average number in queue क्योंकि average हमें instantaneous value नहीं बता रहा था. It takes an average overall. We want to do an instantaneous one, so हम उसको लेंगे current number in queue. आपने current number in queue ले लिया. अच्छा, अब आपके पास you've got certain processes over here. मतलब आपके पास एक ये queue है, एक आपके पास इधर queue बना हुआ है. ये जो T है ना basically queue. हर process के ऊपर आपके पास normally queue बन जाते हैं when you select cease delay release mostly. Then we've got a queue here and we've got a queue here. So अब हमने इसको बताना है कि we want the sealer process queue. Sorry, rework process queue. So just bring this one here and select आपका rework process queue, and this builds the expression here कि nq, that is number in queue for the rework process queue, उसकी count ले लेता है. Click on OK और आपका formula बन जाता है. Want to do this for the entire application period, इसको रहने दें. And then we go to categories. Categories में क्या होता है, आप categorize करते हैं कि based on जो ये आपको value दे रहा होता है, ये rework process queues, उसकी आपने किस तरह categorization करनी है. You want to automate the process of telling you कि कितने आपको queues की जरूरत है. So first one, you keep this at constant, and let's say हमारे पास कोई भी parts नहीं होते queue के अंदर.
So we are going to name this, we're going to keep the 0 और इसको हम कह देंगे no racks. So हमें अगर हमारे पास कोई parts बन ही नहीं रहे थे आपके arena में, so we're going to set up what is called no racks. Double click here. Let's say हमारे पास चूंकि 10 पार्ट्स एक क्यू में आ सकते हैं, सो हम 10 पार्ट्स को लेके 10 पार्ट्स एक रैक में आ सकते हैं, सो हम 10 पार्ट्स को लेके कैटेगराइजेशन बनाते हैं अपनी. सो दिस इज गोना बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 0 to 10. अगर आपके पास पार्ट्स आ रहे हैं, इफ देयर इज अ नंबर इन क्यू, तो हम इसको लेते हैं 1 रैक. हमें एक रैक की जरूरत पड़ेगी, इफ वी गॉट 0 to 10 पार्ट्स, अगर हमारे पास इतने आ रहे होते हैं. Again, we select our range and हम इसको कहते हैं कि 10 to 20, and this is going to be अगर हमारे पास 20 तक अगर हमारे पास parts आ रहे हैं, so we are essentially हमारा एक part 10 एक rack 10 parts आ रहे हैं, so we essentially want 2 racks here. Then we want to have something कि अगर हमारे पास एक और range हम define करें, and if we've got parts in 20 to 30 range, this is essentially going to tell us कि हमें 3 racks चाहिए यहाँ पे. So this is a categorization for कि आपको racks किस तरह से चाहिए depending on the number of queue, जो कि आपकी value यहाँ से वो ले लेता है. So click across. This essentially models आपका current number in queue in order to find out number in queue or number of racks. एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, and that is essentially कि how much of the time या क्या बिहेवियर ये सीलर प्रोसेस हमारे पास फॉलो कर रहा होता है. सो वी नो कि द सीलर प्रोसेस is going in a is up for 120 minutes, but then it goes down for 4 minutes. So we want to know कि किस टाइम के ऊपर या कितने टाइम के लिए, नॉट एसेंशियली टाइम, बट किस किस हमें वी वांट टू नो कि कितना हमारे पास उसमें रहा है, past state या working condition में रहा है, and how much was this in कितने दफ़ा या कितने इस state में जो है ये रहा था when it was failed, was in a failed state. So essentially we want to model that here. In order to do that, आपने करना है इसको sealer state, एक second, sealer state. We want to take this as a frequency again, and because we want to have frequent the behavior it is that it shows, इसको हमने state के ऊपर लेके जाना है. We don't want to necessarily know the time, क्योंकि वो हमें पहले से ही पता है. अच्छा, resource का अपने नाम लगाना है, that is आपका sealer. So अच्छा, resource name is gonna be sealer. इसको हमने और अपने से कुछ भी चेंज नहीं करना, because sealer हमने यहाँ पे नाम दिया था. So resource name is sealer, and then we want to know कि इसकी active state क्या है and इसकी failed state क्या है, and we don't want essentially to add anything here क्योंकि it's not needed. So this essentially takes up the states and displays the states to you. क्या कहते हैं? So this essentially builds your model and it modifies your model a bit. What we did, हमने rework के ऊपर capacity को increase किया, and we set up a schedule at rework कि वो capacity resource increase जो है एक certain schedule को follow करे. We went to sealer, हमने यहाँ पे failure को introduce किया इस process के अंदर. Then we went to rework again and we set up a frequency metric कि जो कि हमें ये बताए कि क्या हमें racks लगाने की ज़रूरत है या नहीं है. So how do these कितने हमारे पास parts क्यू के अंदर आते हैं, और अगर उसकी काफ़ी क्वांटिटी है तो फिर हमें कितने racks लगाने की ज़रूरत है. And then we set up another one which shows a statistic
जो कि हमें शो करता है कि आपका सीलर प्रोसेस, आपका जो सीलर रिसोर्स था वो कितना स्टेट फेल्ड रहा था, कितना आपके पास वो पास रहा था. And yeah, so that was it. So essentially, the data modules that you've studied today, which I'd like to highlight again, is resource, schedule, then you've got failure, then you've got statistic, and you've got एक और था शायद, नहीं यही थे. या यही थे आपके पास. क्यू में हमने कुछ किया है? क्यू में कुछ नहीं है. um, okay, that those are it. So these are essentially the new modules that you've done today, and I'd expect you guys to know these, because probably mid में जो भी कुछ होगा, in some way or another, I believe that these will be in there in that model. So review this lecture, let me know. इसको run करते हैं. So I've given it 16 hours a day. Runtime error was detected 1486. अब इसको मैं टाइम थोड़ा I'll decrease the time a bit. If it's occurring at 14, इसको मैं 14 ही कर देता हूँ, let's say, and try 14 कर दिया, and I would run this. ये जो basically error आपके पास आया था, I believe it's because कि आपके पास इस license की limitation है of 150 parts in at an instant, but I'm not sure. I have to confirm. I believe it's because of that. But anyway, I've run. I'm not so sure कि क्या ये इसी वजह से था या नहीं था. If you're seeing the same, तो उसको टाइम को थोड़ा डिक्रीज कर ले कि आपकी सिमुलेशन पूरी चली जाए, आपको रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाए. But in any way, I'm gonna have this confirmed कि why I'm seeing this क्योंकि ये मुझे पहले भी आया था एक दफा. So anyway, simulation was completed. क्योंकि जो आपका एरर होता है ना, वो बेसिकली आपका पार्ट ए पार्ट बी के ऊपर ही आ रहा होता है. सो दैट क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कोई गलती है नहीं, बिकॉज वहाँ पे कुछ है नहीं. सो इट्स प्रोबेबली कि वो वहीं से जो है ना, वहाँ पे वो पार्ट इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो स्टॉप कर दे रहा है. आई एम नॉट सो श्योर, आई हैव टू कंफर्म इट. सो इन एनी केस आपके पास रिजल्ट्स आ गए. यू कैन व्यू द रिजल्ट्स. सो वी गॉट चेंजेस इन क्यू. सो हमारे पास क्यू में ये टाइम था. यू नो रीवर्क प्रोसेस क्यू, क्योंकि आपके पास रीवर्क में अपने रिसोर्स को इंक्रीज किया था, या आपके पास जो है वहाँ पे बहुत कम पार्ट्स जा रहे थे, क्योंकि आपका एसेंशियल आपका 91% जो है वो तो एसेंशियली आपके पास ट्रू ही जा रहा था. जो आपकी इनिशियल होती है, आपके पास क्या कहते हैं, पार्ट्स आपके पास होते हैं, तो वो तो 91% अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट में चले जाते हैं, एंड ओनली 9% ऑफ द पार्ट्स आर फेल्ड. सो वो जो फेल्ड पार्ट्स आ रहे थे वो क्यों आपके पास बिल्डअप ही नहीं होता है एसेंशियली. सो आपके पास प्रॉब्ली उसी वजह से आपके पास यहाँ पे वो लेंथ ही जीरो बन रही है, बिकॉज एवरी पार्ट्स गो स्ट्रेट इनटू प्रोसेसिंग एट द rework process module, and it doesn't go into the queue. So that's one reason that I believe कि आपके पास जीरो आ रहे होते हैं. So you can look at resource. ठीक है, आपकी resources की utilization किस तरह थी, and then you can look at a graphical view here कि आपके पास how was these utilized. Sorry. Tally आपका shows के tally हमने basically start में start की थी, where we were looking at counting the metrics जो कि हमारे पास initially pass हो रहे थे. Then हमारे पास हमने racks setup किए थे. 1 second. Racks were user specified. Frequencies probably. So frequency यहाँ पे basically आपका
it's showing the observation, sorry, यहाँ पे it's showing the observation आपकी sealer state की कि 6 times it was observed to be failed, and 143 times it was observed to be busy, and 141 times it was observed to be idle, and likewise the time, और फिर इसी टाइम की percentage, and likewise जो कि आपका यहाँ पे था, since हमारे पास क्यू बन ही नहीं रहा था, so we essentially do not need racks at the service station जो कि आपका था वहाँ पे रिवर के ऊपर जो अपने रैक्स रखे थे। अच्छा, जब आप इसको अपनी बुक से कंपेयर करेंगे, मे बी यू विल सी डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड यू प्रोबेबली विल सी डिफरेंट रिजल्ट्स। उसका रीज़न ये है कि जो बुक ने सिमुलेशन रन की है, दैट इज़ फॉर क्वाइट अ लॉन्गर टाइम, मतलब वो 10 दिन के लिए थी, एंड आई हैव ओनली रन दैट फॉर 14 आवर्स, सो रिजल्ट्स मे बी चेंज्ड फ्रॉम व्हाट यू सी इन द बुक, बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। आई हैव जस्ट done them through the board. Utilization probably आप लोग theory की क्लास में करेंगे, and I'll follow up soon with क्या कहते हैं enhancing the animation किस तरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। I'll be following up soon, hopefully this week, कि आप किस तरह से इसमें animation ऐड कर सकते हैं, and then the next chapter uh, यार रिकॉर्ड हुई है कि नहीं? हाँ, हो रही है। Anyway, take a look at this, ठीक है। If you've had the model before, let me know if you've any issues here. I'm not sure कोई कुछ पूछ नहीं रहा. If anyone has any issues, feel free to reach out. एक दफ़ा मुझे कह दे, I'll be happy to set up a session with you, or I can build these again for you. मैं आपको पिछले जो क्लास हुई थी, I can do that again for you. And if you have any questions, I can answer those. Just let me know, because otherwise, I believe कि आप लोग आ रहा है फिर सब कुछ. But if you don't, feel free to ask me anytime. आप लोग ग्रुप्स में पढ़ते हैं और कई बंदे आके आप several of you want to have a session, feel free, just let me know. या आप वर्किंग आवर्स में आ सकते हैं, या आप आफ्टर 11 आप आ सकते हैं, I'll explain everything over screen share. Or if you're doing these और आपको कोई प्रोसेस आ रहे हैं, so I said that in the previous class, आप कॉल पे नहीं आना चाह रहे, you can just make a video and you can send that over to me. एक दो चीज़ों का यहाँ पे आप लोग ख्याल रखें, यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा आपको मसले आ रहे होंगे, that's because of the naming conventions. Arena is quite strict in how it names everything, so try to have a look, कि आपकी नाम जो है वो ठीक हो रहे हो। एक दफ़ा गलती हो जाए आपकी नेमिंग कन्वेंशन में, या एक नाम आप 2 दफ़ा रिपीट कर देते हो, बस वो फिर एरर ही ले रहा होता है सारा टाइम। So this was it. I'll be following up soon. Again, if you have any questions, let me know. और प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लें, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लें आप लोग। मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स नहीं दे रहा होता, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग उसको देखें ही ना। Please do these, because mid is probably going to consist of a model and something else, maybe MCQs. So try to do these and try to get to grip on Arena. Okay, see you next time.